मदन रीड करो। Sir, the first thing which I would like to clarify is about the inflationary trend which has set in. One of the honorable members, Shri Shankar Ghosh, a very experienced member of this house who had also been in the planning commission and knows the intricacies of how the things are being worked out, has been placed to state here that the large inflation is very large inflation is very high, and added to that the balance of payment position is going to be very bad, uh, compared with the percentage that we have worked out for the successful plan as a whole for imports for the first year. उसके बाद क्या था ये, the import bill has risen very high stock. Then how this assumption going to be, ये क्या है, करेक्ट। correct stop, question mark. That is the point, and a very valid point which he raised during the course of the discussion. Stop, sir. He also mentioned about the Honorable Finance Minister making his speech at Kanpur, wherein he seems to made a reference that little industry trend is 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 a kind of a stimulation to the economy. Stop. Para. Sir, the देखिए मिस्टेक्स सभी अपनी अपनी, मैं कर देता हूँ उसको चेक। पहला मदन ने पढ़ा था, मदन का यहाँ पे दैट द रेट ऑफ एक साथ लिखा करो मदन। रेट ऑफ लार्ज, आपने लार्ज किया है यहाँ पे। और सिक्स्थ के आपने सक्सेशन किया था क्या? नहीं, मैंने सक्सेसफुल पढ़ा था सर, लाइन पे बना दिया मैंने। ओ ओ सिक्स्थ का मैं वैसे ठीक है, थ्रू द हाँ लाइन बनाता हूँ ये सिक्स ना। वो डाउनवर्ड चला गया सक्सेसफुल जैसा ही, ठीक है। जी दो सर। एल, हाँ यहाँ पे इंपोर्ट्स में आपने एस एस नहीं किया है, और ठीक है, पूरा सही है। नेक्स्ट इसके बाद है हिमानी का। हिमानी, शंकर घोष आपने नहीं किया, जबकि शंकर घोष 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है। और इम्पोर्ट द ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स बात कर रहे हैं फिक्स चीज की। आई एम श्योर द मोस्ट ऑफ द, आई श्योर ऑफ द कभी नहीं होगा, आपने मोस्ट स्किप किया है। आप क्वेश्चन मार्क ओके सिचुएशन सर। के बाद, और आस्पेक्ट इज यहाँ पे इज छूटा है। नेक्स्ट क्लास जो भी इसके बाद स्टार्ट। सर, द फर्स्ट थिंग which I would like to clarify is about the inflationary trend which has set in. One of the honorable members, Sri Shankar Ghosh, a very experienced member of this house who had also been in the planning commission and knows the intricacies. ये हो चुका है ना? किसको वॉइस नहीं आ रही, जल्दी बोलो। नीलम, मुझे नहीं आ रही है सर। नीलम आपको नहीं आ रही है। जसप्रीत 43 का बैक होना है ना? कल बोल दी थी हाँ सर, हाँ हाँ बैक होगा। अच्छा, फर्स्ट पैरास बोला था, बाकी नहीं हुआ था ना? यस सर। हाँ हाँ जी, सर, हाँ ये भी पूरी नहीं हुई थी। वॉइस जिसको इसको कट रही, रिकनेक्ट करो, जल्दी से रिकनेक्ट करो। हाँ हो गई रिकनेक्ट सभी? अब प्रॉपर वॉइस आ रही है? जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो सभी। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। ठीक, स्टार्ट। सर, द फर्स्ट थिंग which I would like to clarify is about the inflationary trend which has set in. One of the honorable members, Sri Shankar Ghosh, a very experienced member of this house who had also been in the planning commission and knows the
intricacies of how the things are being worked out, has been pleased to state here that the rate of inflation is very high, and added to that the balance of payments position is going to be very bad compared with the percentage that we have worked out for the sixth plan as a whole for imports. For the first year, the import bill has risen very high. Then how is this assumption going to be correct? Question mark. That is the point, and a very valid point, which he raised during the course of the discussion, sir. He also mentioned about the Honorable Finance Minister making his speech at Kanpur, wherein he seems to have made a reference that a little inflationary trend is a kind of stimulant to the economy. Para. Sir, the inflationary trends we cannot view in isolation. Honorable Sri Shankar Ghosh will definitely agree with us that there are two factors which will have to be taken into account. The first factor is the international situation which is now obtaining. Secondly, whether we like it or not, we have to import the oil products. If they are to be imported, can we take a serious view of the situation? Question mark. That is a thing which I am sure most of the honorable members there will be able to appreciate. The second aspect is why is it that we have such a high import bill in 1980-81 question mark when the plan itself commenced and when we were talking in terms of 9% immediately in the very first year it jumped. I am sure that most of the honorable members are aware of the fact that it is on account of the kind of legacy that this government got. I would not like to dilate on that issue, but the fact of the matter is that the agricultural production had gone down. Even in the industrial sector, there was a decline of 1.4%. The coal production had considerably gone down in terms of production, and the electricity generation was at the lowest. If we had to make a beginning, which in fact is within the control of the government of India, with these infrastructural facilities which will have to be provided both in agricultural sector and the industrial sector, concerted efforts will have to be made. Stop. Read karo. Sir. Sir, the first thing which I would like to clarify is about the inflationary trend which has set in. One of the honorable members, Shri Shankar Ghosh, a very experienced member of this house who had also been in the planning commission and knows the intricacies of how the things are being worked out, has been placed to state here that the large inflation is very large inflation is very high, and added to that the balance of payment position is going to be very bad uh, compared with the percentage that we have worked out for the successful plan as a whole for imports for the first year. उसके बाद क्या था ये, the import bill has risen very high stop.
then how this assumption going to be ये क्या है correct. correct stop question mark. That is the point and a very valid point which he raised during the course of the discussion. Stop, sir. He also mentioned about the Honorable Finance Minister making his speech at Kanpur, wherein he seems to made a reference that little industry trend is is a kind of a stimulation to the economy. Stop. Para. Sir, the inflationary trend we Stop. cannot. हिमानी ट्रांसक्राइब करो, रीड करो हिमानी. Okay, sir. So, the inflationary trend cannot view in isolation. Honorable Shri, यहाँ सर कोई नेम था, will definitely agree with us that there are two factors which have to be taken into account. The first factor is the international situation which is obtaining. Secondly, whether we like it or not, we have to import oil products. If they are to be imported, can take. रीड करो हिमानी. Okay, sir. So, the inflationary trend cannot view in isolation. Honorable Shri, यहाँ सर कोई नेम था, will definitely agree with us that there are two factors which have to be taken into account. The first factor is the international situation which is obtaining. Secondly, whether we like it or not, we have to import oil products. If they are to be imported, can take a serious view of the situation. That is a thing which I am sure of the honorable members, they will be able to appreciate Appreciate. the appreciate the second aspect. Why is it that we have such a high import bill when the plan itself commenced and when we were talking in terms of 9%? In the first year it jumped. Stop. Sure, हाँ sir. Sweetie. Sweetie. हाँ सर, पढ़ रही हूँ. कहाँ कहाँ से छोड़ा इसने? देखना चाहिए था आपको. हाँ सर, थोड़ा मिस हो गया सर. सर, आई एम श्योर डैट. हाँ सर. हाँ. I am sure ठीक है. that. I am sure that most of the honorable members are aware of the fact that it is on account of the kind of legacy that this government got. I would not like to dilate on that issue. To effect of the matters is that the agricultural production had gone down. Even in the industrial sector, there was a decline of 1.4 percentage. The coal production had considerably gone down. In terms of electricity generation at the lowest, if we had to make a beginning, which in fact is within the control of the government of India, with these infrastructure facilities which will have to be provided both in agriculture sector, industrial sector, consultate will have. देखिए मिस्टेक्स सभी अपनी अपनी. मैं कर देता हूँ इसको चेक. पहला मदन ने पढ़ा था. मदन का यहाँ पे दैट द रेट ऑफ एक साथ लिखा करो मदन. रेट ऑफ लार्ज आपने लार्ज किया है यहाँ पे. और सिक्स्थ के आपने सक्सेशन किया था क्या? नहीं, मैंने सक्सेसफुल पढ़ा था सर, लाइन पे बना दिया मैंने. ओ सिक्स्थ मैं वैसे थ्रू द लाइन बनाता हूँ ये सिक्स्थ ना. वो डाउनवर्ड चला गया सक्सेसफुल जैसा ही. ठीक है. जी दो एल. हाँ यहाँ पे इंपोर्ट्स में आपने एस नहीं किया है और ठीक है, पूरा सही है. नेक्स्ट इसके बाद है हिमानी का. हिमानी शंकर घोष आपने नहीं किया, जबकि शंकर घोष 2 टाइम्स आया है. और इम्पोर्ट द ऑयल.
ऑयल प्रोडक्ट्स बात कर रहे हैं फिक्स चीज की। आई एम श्योर द मोस्ट ऑफ द, आई श्योर ऑफ द कभी नहीं होगा, आपने मोस्ट स्किप किया है। आप क्वेश्चन मार्क सिचुएशन sir. के बाद, और आस्पेक्ट इज यहाँ पे ए छूटा है। नेक्स्ट क्लास जो भी इसके बाद परफेक्ट, फिर इसके बाद है स्वीटी का, स्वीटी ने बट स्किप किया है। फिर इसके बाद है परसेंटेज, परसेंटेज बोला था आपने, जबकि यहाँ पर और सेंट है। आप सभी ध्यान देंगे, पर और सेंट अलग अलग लिखते हैं, एक साथ मत करना, ये ऑफिस में शायद सही बताएगा, और मगर ये रॉन्ग है। ये यहाँ पे हैड कंसिडरेबली, ये आपने बोला था कंसिडरेबल, और यहाँ पे हो गया अपने पास ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद वर्ब आ गई, और इसके बाद क्या आना चाहिए, बल्ली एडवर्ब, और ये हो गया एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, वर्ब के पहले आता है, मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इससे पहचान में नहीं है, जब जितने भी बी एल वाई लगने वाले होते हैं वो होता है एडवर्ब, और आपने क्या लगाया था, बी एल ई, तो ये है एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे होना चाहिए था बी एल वाई, और आपने बोला बल, बी एल ई, तो बी एल ई एडजेक्टिव आपने बोला है, और यहाँ पे वर्ब है। वर्ब के आगे एडजेक्टिव नहीं आता है, नाउन के आगे आता है, तो इससे कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है आगे। और यहाँ पे स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, यहाँ पे देखो कंसिडरेबल और कंसिडरेबली, अगर नहीं भी लगा रहे हो तो दोनों को अलग कर लो, कॉपी में अलग लिखो, और जो बी एल ई वाला है वो एडजेक्टिव लिख लो ऐसे, यानी कि लाइन कॉपी में, और बी एल ई लिख लो अपने एडवर्ब में। तो बस इतना बस करना है, और ये एडवर्ब है मतलब वर्ब के आजू बाजू भटकेगा, और ये है एडजेक्टिव तो ये नाउन के आजू बाजू भटकेगा, बस इतना समझ लो। स्क्रीन शो हो रही है, ठीक। स्टार्ट। मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, बाय मूविंग दिस बिल फॉर consideration, my honorable friend has raised a very important question affecting public life. There could be absolutely no matter of doubt that the corruption in public life has become rampant. As a result of this, people in public life have become great suspects. In a seminar which I was attending on code of conduct for policemen, somebody observed that once a man becomes a minister, occupies a seat of power for generations, his economic problems are solved. It may be an exaggerated statement, but it has been our sad experience that people who have occupied high positions in public life, who have become ministers, members of parliament, or members of legislatures, have overnight become affluent persons. This may not be true of all members of parliament. This may not be true of all members of legislatures. This may not be true of all ministers, but quite a large number of them have overnight become so affluent that it becomes really difficult for any man to understand how the men become so affluent. Para. The whole thing becomes a mystery to the common man, and the character and integrity of the person concerned becomes highly suspect. I know, sir, that it would be too much to expect the same standard of public behavior as we had during the days of Ramayana. Those who were in charge of administration
those who were occupying the highest office put themselves to the highest form of test, the highest form of ordeal. Can there be any doubt that public life is so much corrupted today that we have all become suspect? Question mark para. In fact, the people have also become jealous of the members of parliament. They say somehow one has got to become a member of parliament or a member of the legislature or somehow come closer to the corridors of powers. Why do they say this? Question mark. Because they see the sudden change in the outlook, the behavior, the kind of living of a particular individual. But sir, the solution in this problem of corruption in public life may not be like instant coffee. The solution may be very difficult. In fact, this was pointed out by the Satnam Committee itself. In its report, it made certain recommendations that a certain code of conduct should be there and that shall be a solution to end corruption in public life. Stop. पढ़िए पढ़िए. हाँ सर. Mr. Vice Chairman, sir, by moving this bill for consideration, my honorable friend has raised a very important question affecting public life. There could be absolute. There could be Absolutely. absolutely no matter that a corruption in public life has become or maybe Great suspects. it's a great suspect in a seminar of these people in public life for becoming great suspect in seminar which I was attending. Wait. Code of Al-Shaba. Yes, sir. फिर से देयर Yes, कुड sir. से फिर से ट्रांसक्राइब करो. देयर कुड एब्सोल्युटली से फिर से रीड करो. हाँ सर. There could be absolutely no matter that the corruption in public life has become. यहाँ पे मेरा कुछ तो था. Rampant. As a matter of rampant. As a result of this, people in public life have become पता नहीं suspect. Great suspect. Great suspect in a seminar which I was attending the code of conduct. ये सर पुलिस है. For policemen. अच्छा पुलिसमैन मैंने नहीं बनाया है. Policeman become नहीं. Once a man become minister, he should generate. क्या हुआ? अल्सबाज रीड नहीं कर पा रहे. ये कोई मुझको बताएगा स्पीड ज्यादा थी क्या? नहीं सर स्पीड ज्यादा तो नहीं थी. ये ठीक मैं थी, प्रोग्रेसिव अनसीन करती हूँ और केसी की प्रैक्टिस करती हूँ सर. प्रोग्रेसिव अनसीन ही कोशिश करती हूँ लिखने का. प्रोग्रेसिव क्या करते हो? मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करती. इसको सोचती हूँ अनसीन लिखूं और केसी की प्रैक्टिस करती हूँ. अच्छा ऐसा करते हो. हाँ सर मैं पूरा अनसीन करती हूँ
आपका ये केसी, प्रोग्रेसिव और ये लीगल? मैं भी सर अनसीन करता हूँ सब कुछ। मैं भी अनसीन मैं भी करती हूँ पूरा। सर मैं भी अनसीन डिटेशन देता नहीं हूँ। नहीं, मैं कैसी की प्रैक्टिस। तो सर हाँ तो ठीक है, अगर केसी का टाइप कर रहे हो तो वो चीज़ हो जाती है, मगर इसको भी करना चालू करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं सर चेंज करूंगा, है ना। ओके सर। दीप, somebody observed, that से रीड करो। Somebody observed that once a man become a minister, um, occupies a seat for or power for generations, his economic problems are solved. It may be an exaggerated statement, but it has been uh, our our sad experience that people who have occupied high positions in स्टॉप। public life. जी sir? ये इसका एग्जेजरेटेड प्रोनाउंसिएशन है Yes sir. कि एग्जेजरेटेड की स्पेलिंग अलग रहती है, यही है। नहीं सर यही है, exaggerated ही है इसका pronunciation. ठीक है, मुझको लग रहा था स्पेलिंग कुछ अलग होगी, इस समय थोड़ा सा रुक गया, मेरे को लगा कि एग्जेजरेटेड की स्पेलिंग अलग है, ये अलग है। ठीक है, चलिए। Yes sir. Exaggeration, but it has been our shared experience that people who have occupied high positions in public life, who have become ministers, members of parliament or members of legislatures, have overnight become affluent persons. Uh, Affluent persons, full stop. This may not be true of all members of parliament. This may not be true of all members of legislature. It may not be true of all ministers, but quite a large number of them has overnight become so affluent that it becomes really difficult for any man to understand how the man becomes so affluent. स्टॉप। Para, the whole thing. प्रीति। And the character and the integrity of the person concerned becomes a highly suspect. I know, sir, that it would be too much public behavior as we had during the its so यहाँ पे छूटा है दूसरा Ramayana. Those who were in charge in those who were occupying to be निशिता, themselves to the निशिता, टू मच टू एक्सपेक्ट से रीड करो। Yes, sir. Okay. I would be too much to expect the some standard of public behavior as watch during the acts of Ramayana. Those who were in charge of administration, those who were occupying the highest office to be themselves to the highest. उसके बाद एक वर्ड मिस हुआ था, द highest form of order or deal. Can there be any due that public life it would have so much created to which that we have all become suspect question mark. In fact, the people have also become jealous of the members of parliament. Uh, it it says somehow one has get to become a member of parliament or the member of the legislature or somehow come closer to the corridors of powers. Why it they say this question mark? Because they see the ये क्या है? Because they see the question started in the
in the outlook of the behavior account of living all the particular individual, but sir, the solution in this problem of corruption in public life expand extend coffee. The solution may be very difficult. In fact, this was pointed out by the Sanatham committee itself. In its report, it made certain recommendations with a certain code of conduct should be there, and that shall be a solution to end corruption in public life. वर्ड डिटेशन में देख चुका हूँ आपका Yes, sir. एब्सोल्यूट। हाँ एब्सोल्यूट यहाँ पे एब्सोल्यूटली है, टू बी एब्सोल्यूटली आपने एब्सोल्यूट बोला था। ऑफ डाउट ये स्किप हुआ है। रैम्पेंट आप रीड नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा स्टोक इट अप बनता है। ग्रेट सस्पेक्ट्स यहाँ पे एस से स्किप है। बिकम a man becomes इस मैन लगा है तो बिकम है, मतलब कहना चाहिए कि इसको सिंगुलर बना रहे हैं कि एक मैन है, ठीक है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए करना पड़ता है, एस लगाना पड़ता है। और यहाँ से है दीप, किसकी? प्रीति की। यहाँ चेंज हुई थी लाइन, ये कौन रीड किया इसको? सर स्पीड थोड़ी स्लो दीप। रहती तो मैं लिख लेती हूँ, लेकिन स्पीड मैं सर आप जो बोल हाँ नहीं लिख पाती। वो धीरे धीरे आएगा, आ जाएगा। यहाँ से दीप ने रीड किया था somebody observed that, ये स्किप हुआ था, शायद अलशबा का स्किप हुआ था। फिर exaggerated परफेक्ट रीड किया, और यहाँ पे दिस में है, थोड़ा सा आउटलाइन सही करो। इट यहाँ पे इट में आपने रीड किया, इट में नॉट। नेक्स्ट ओके सर। देम यहाँ पे आपने हैज किया है, यहाँ पे हैव ओवरनाइट हैज आपने बोला था। ओके सर। पैरा इसके बाद प्रीति कॉपी दैट इट वुड आपने क्या रीड किया? आई वुड, प्रीति ने आई वुड बी टू मच। प्रीति ने रीड किया था, हाँ इतना ही वाला। और इसके बाद यहाँ से टू एक्सपेक्ट द सेम स्टैंडर्ड, ये आपका पूरा स्किप हुआ है। फिर इसके बाद है निशिता की कॉपी ड्यूरिंग द डेज, यहाँ पे डेज ऑफ रामायणा, तो यहाँ पे आपने किया इट्स। नेक्स्ट इसके बाद है पुट, यहाँ पे पुट है, आपने किया टू बी निशिता, है ना। और यहाँ पे और डील है, इसको एक करेक्शन कर लो यहाँ पे। और डायल नहीं है ये, और डील एक साथ कर लो, वर्ड सभी वहाँ पे करेक्ट कर लो। यहाँ फॉर्म पे ऑफ सर शायद टेस्ट, आपने ऑर्डर बोला था। हाँ ऑर्डर बोल दिया था, उसको काटो और डील एक साथ कर दो, और डील। ओके सर। मेरे को लगा था ऑर्डिनल ना लिखा हो, तो मैंने ऑर्डर पढ़ दिया उसको। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ दे, तो इट से, फिर से यहाँ से इट से आपने किया निश्चिता। और यहाँ गॉट है इसके बाद गेट नहीं आ सकता, आपने कैसे कर दिया? गॉट ही होगा ना थर्ड फॉर्म। बिकॉज दे सी द सडन चेंज, ये पूरा आपका यहाँ पे लाइन गड़बड़ हुई है कॉपी में, हुआ है। सतनाम सही है, पूरा सही है। और यहाँ पे लिविंग ऑल ये गलत है, लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर है। काइंड ऑफ, लिविंग ऑफ, ये खुद में फ्रेज यानी कि कंपाउंड फ्रेज आ गया एक साथ दो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही थी? अब शो हो गई, ठीक है। लीगल लिखिए। लीगल एक्सरसाइज होनी है 5। स्टार्ट।
It may be mentioned that a writ petition under Article 32 of the Constitution was filed by a member of Central Administrative Tribunal contending that the decision in SP Kumar versus Union of India and others 1987 SCC 124 executed the Central Administrative Tribunal with the High Court and therefore its chairman should be equated with the Chief Justice of a High Court and the Vice Chairman and members must be equated with the sitting judges of the High Court in all respects. It was also contended that while the Vice Chairman have been equated with the sitting judges of the High Courts, the members have not been so equated in their pay and other conditions of service, and that a distinction was made in the conditions of service, particularly the pay and age of superannuation between the vice chairman and the members, which was arbitrary, as a result of which the members also should be given the same pay as that of the vice chairman, and their age of superannuation should also be the same, that is 65 years, as that of the vice chairman. On interpretation of Article 323A of the Constitution, this court took the view that administrative tribunals constituted thereunder are distinct from the High Courts and dismissed the writ petition para. The Administrative Tribunals Act 1985 came to be amended by the Administrative Tribunals Act 2006. By the said amendment, the post of Vice Chairman in the Administrative Tribunal is abolished. A new provision, that is Section 6 within bracket 2, is introduced, which modifies the qualifications for appointment as administrative member in the tribunal. Section 10A is inserted in the main act, which provides that the conditions of services of the judges of the High Court would be applicable only to the members appointed after February 19, 2007. The newly inserted Section 10A restricts the total term of the members of the administrative tribunals to 10 years, though by the said amendment the age of superannuation for a members is raised from 62 to 65 years. Further, Section 10A postulates consideration of a case of a member for reappointment by selection committee after February 19, 2007. Section 12 within bracket 2 of the Administrative Tribunals Act 1985 is amended, and power is conferred on the appropriate government to designate a vice chairman for the purpose of performing certain duties and functions of the chairman para. The case of the petitioner is that the post of vice chairman was in existence in the administrative tribunals
since its inception, which enabled the judges of various high courts to opt for Central Administrative Tribunal and provided an opportunity in the nature of promotion to the members of administrative tribunals to the post of vice chairman. According to the petitioner, the abolition of the said post now would create anomalous situation in the structure as well as administration of the tribunals if any high court judge is to be appointed only as a member, and therefore the abolition of the post of vice chairman is unconstitutional. Stop. मदन रीड करो, क्या बोल रहे हो प्रीति? तेज था सर, पढ़ता हूँ प्रीति सर क्या मैं। बोल रहे हो? मेरा ना छूटा है थोड़ा सा ना 32 कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है नहीं एरिया, जहाँ पे वो नाम आ गया था एसपी ग्राम वर्सेस एससीसी वाला। ठीक है। हाँ एसपी कुमार वाला है नहीं सर एरिया, ये वाला थोड़ा छोटा था मेरा, बाकी तो मैं पढ़ रहा हूँ। It may be mentioned that a writ petition under Article 32 of the Constitution was filed by member of Central Administrative Tribunal containing that the decision सर ये छूटा हुआ है एसपी कुमार वर्सेस एफसीसी 124 जो है excluded the Central Administrative Tribunal with the High Court, and therefore its chairman should be equated with the Chief Justice of the High Court, and the Vice Chairman and members must be equated with the sitting judges of High Court in all respects. So it was also contended that Stop, प्रीति रीड करो। प्रीति अलशबा एक्टिव रहा करो। अलशबा रीड करो। अलशबा एक्टिव रहा करो, तुम लोग एक्टिव नहीं रहते, नहीं क्या करते रहते हो? जल्दी रीड करो ना, जल्दी। वाइल द Yes, sir. Nishita, Yes, it was sir. also contended that It was also contended that while the vice chairman have been equated that sitting judges of the High Court, the members have not been so equated in their pay and other conditions of services, and that a distinction was made in the conditions of service, particularly the pay and age of superannuation between the vice chairman and the member, which was arbitrary, as a result of which the members also should be given the same pay as a that all the vice chairman, and there is all superannuation should also which the same that is 65 stop. years. हिमानी ट्रांसक्राइब करो। Okay, sir. Their age of so यहाँ पे कुछ word था should also be the same that is 65 years as that of the vice chairman on interpretation
Article 323 of the Constitution. This court took the view. Administrative tribunal constituted thereunder distincted from the high courts and dismissed the writ petition. Para change the administrative tribunal 1985 came to be amended by Tribunals Act 2006 by the state amendment is abolished. The new provisions section 6(2) is introduced, which modify the qualification for appointments is administrative. मिस्टेक्स देखो सभी तीनों, मदन और निशिता और हिमानी। Yes, sir. मदन आपका कंटेंडिंग है, कंटेनिंग नहीं है, कंटेंडिंग है, इसको सही कर लेना। यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1987, यहाँ से SCC तक आपने पूरा स्किप हुआ है। इक्वेटेड आपने एक्सक्लूडेड बोला था, इसको इक्वेटेड को एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट इज जस्टिस ऑफ द, यहाँ पे आपको आ लगाना है, आपने द हाई कोर्ट लगाया है। इसके बाद पैरा निशिता का है। इट वॉज ऑल्सो कंटेंडेड वाइल, यहाँ पे आपका वाइल स्किप हुआ है। और वाइस चेयरमैन, ये भी सही था, ठीक है, आपका परफेक्ट है निशिता। बस यहाँ पे सर्विस में यहाँ पे एक्स्ट्रा एस सर्विसेज कर दिया था। प्रीपोजिशन कंडीशंस ऑफ अदर कंडीशंस ऑफ जब भी कभी प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद या तो ING फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ठीक है, सही कर लेना। ओके सर। अधिकतर ऐसा केस होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ING फॉर्म आता है और कनेक्टर के बाद भी हमेशा ING फॉर्म का ही वर्ब आता है। यहाँ पे सिंगल फॉर्म का यूज हुआ है, कभी भी एस नहीं आएगा। और यहाँ पे फिर इसकी कॉपी है हिमानी। Yes, sir. दैट इज है, यहाँ पे आपने दैट इज नहीं बोला था, और ट्रिब्यूनल्स में यहाँ पे एस है। और UGC यहाँ इसको जो है, फिर इसने क्या किया है, यहाँ पे एस नहीं लगा है, तो समझ सकते हो अगर एस नहीं लगा तो ये सिंगुलर हो गया ये। Yes, sir. यानी कि ये पॉजेसिव केस में चला, ये पैसिव केस में चला गया ये वाला सेंटेंस, समझ में आया? Yes, sir. तो